Welcome learners. I hope you remember the previous class on capital budgeting which we had on 3rd July. Now, in the previous class we learnt about what capital budgeting is, what are the different flow of cash, that is cash outflow and cash inflow. To just give a recap, cash outflow means total investment in a project, whereas cash inflow comprises of two things: regular or operating cash inflow and terminal cash inflow. That is what we had covered till the previous class. And then we also had a glimpse of different methods. Let me tell you what are the different methods which we will be covering today. So, today we take a look at the different capital budgeting techniques which are called as or capital budgeting methods. All the methods are categorized into two broad categories, that is non-discounted cash flow techniques and discounted cash flow techniques. Now, you might be surprised why there are two categories. As apparently it appears, non-discounted cash flow methods are the one in which time value of money is not considered, whereas in discounted cash flow method we consider the time value of money. जैसा कि आप देखते हैं नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स में क्या आ जाएगा, ऐसे मेथड जिसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ध्यान नहीं रखते हैं. अगर आपको याद हो मेरी अर्लियर क्लासेस, और मैंने लास्ट क्लास में आपको रिमाइंड भी करवाया था कि फॉर ऑल दीज क्लासेस ऑफ कैपिटल बजटिंग वी माइट रिक्वायर और वी विल रिक्वायर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. और टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं. फिर भी मैं एक छोटा सा रिकैप बीच में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको दे दूंगा. अब आप देखिए नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स क्या होती हैं जिसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ध्यान नहीं रखते हैं. दैट मीन्स इफ यू आर गेटिंग 10,000 इन द फर्स्ट ईयर एंड देन अगेन यू आर गेटिंग 10,000 इन द सेकेंड ईयर, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स में फर्स्ट ईयर का 10,000 सेकेंड ईयर के 10,000 के बराबर है, वेयर एज अकॉर्डिंग टू टाइम वैल्यू कंसेप्ट बोथ आर नेवर सेम. बिकॉज एक साल के बाद जो 10,000 रुपये मिलेंगे दैट मीन्स फर्स्ट ईयर के एंड पे, और जो सेकेंड ईयर के एंड पे 10,000 मिलेंगे उन दोनों को हम इक्वल नहीं मान सकते. दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टाइम वैल्यू एंड नॉन टाइम वैल्यू, दैट इज डिस्काउंटेड एंड नॉन डिस्काउंटेड मेथड्स. So, now if you see the methods which we have, the first and the foremost simplest method is payback period method. Payback period method falls in the non discounted cash flow techniques. That means to say in non discounted cash flow technique first method is payback period. अब आप सरप्राइज होंगे कि payback period का मीनिंग क्या रहेगा. Payback period means the payback period measures the number of years required for the CFAT, that is cash flow after tax. CFAT stands for cash flow after tax, to pay back the initial capital investment outlay. It is determined as follows, वो मैं आपको बताऊंगा. अब आप देखिए payback period का अगर हम सिंपल मीनिंग लगाएं कि ऐसा टाइम पीरियड जिसके एंड पे मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट जो है प्रोजेक्ट वाला वो रिकवर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. एंड जस्ट टू रिमाइंड यू, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स प्रैक्टिकली मीन्स ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो और रेगुलर कैश इनफ्लो. दैट मीन्स हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, पे बैक पीरियड का मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जिसके एंड में मैंने जो टोटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में किया है वो रिकवर हो जाता है. किसकी हेल्प से? रेगुलर कैश इनफ्लो की हेल्प से. दैट इज कॉल्ड एज पे बैक पीरियड. नाउ यू माइट बी सरप्राइज, इतनी सिंपल टेक्निक कौन यूज करता होगा, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पे बैक पीरियड मेथड इज यूज्ड बाय
मेजोरिटी ऑफ द बिजनेसमैन, मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज, क्योंकि सिंपल फंडामेंटल है। अगर मैं कहता हूं दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई, प्रोजेक्ट एक्स का पे बैक पीरियड है 2 साल एंड प्रोजेक्ट वाई का पे बैक पीरियड है 5 साल, और दोनों में इन्वेस्टमेंट बराबर ही लग रहा है, लेट अस से 10 लाख रुपीस का। तो यहां देखिए हमारा सिंपल कनोटेशन ये है कि एक प्रोजेक्ट जिसका पे बैक पीरियड 2 साल है, दूसरा प्रोजेक्ट जिसका पे बैक पीरियड 5 साल है। तो 2 साल वाले पे बैक पीरियड प्रोजेक्ट जिसको मैं एक्स कह रहा हूं, वो हमें क्या देगा, विद इन 2 years, और दैट इज बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इट विल गेट मी बैक माई इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख रुपीज, मेरे 10 लाख रुपए मुझे वापस मिल जाएंगे। वेयर एज प्रोजेक्ट वाई जिसका पे बैक पीरियड 5 साल है, उसमें मेरे 10 लाख मुझे कब वापस मिलेंगे, 5th ईयर के एंड पे। अब यहां देखिए बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर क्या देखता है या कंपनी क्या देखती है, सूनर द बेटर, सूनर वी रिकवर आवर इन्वेस्टमेंट, लेस रिस्की इट इज। That is why we say a project which has got minimum duration of payback period is called as less risky as compared to the another one. तो यहाँ पे अगर हम x और y को कैटेगराइज करेंगे रिस्क कैटेगरी में, तो x जिसका पे बैक पीरियड 2 साल है उसको लेस रिस्की मानेंगे एज कंपेयर टू y जिसका पे बैक पीरियड 5 साल है। इसीलिए मैक्सिमम बिजनेसमैन, मैक्सिमम की बात मैं करूंगा, जो लोग नॉन डिस्काउंटेड मेथड्स में जाते हैं, पे बैक पीरियड को पसंद करते हैं। अब पॉइंट आता है कि पे बैक पीरियड कैलकुलेट कैसे होगा, हाउ द पे बैक पीरियड हैज टू बी कैलकुलेटेड। दिस इज सिंपल मैथडोलॉजी। बिफोर टेलिंग यू द मैथडोलॉजी, मैं आपसे एक सबमिशन करूंगा, रीड द न्यूमेरिकल केयरफुली, जोट डाउन द स्टेप्स। व्हाट आर द स्टेप्स? स्टेप नंबर 1, एस्टिमेट कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो मीन्स हाउ मच इन्वेस्टमेंट वी आर मेकिंग इन द project, and cash outflow, if you remember in the previous class we learned that can be on assets also and working capital also. That means एक प्रोजेक्ट जो आप नया लगाते हैं उसमें आपकी एसेट्स में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है और वर्किंग कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज कैश आउटफ्लो। सो स्टेप नंबर 1, एस्टिमेट द कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो will be on the assets definitely, it might be on the working capital also. Both put together are called as total investment or total cash outflow. Then step number 2. Step number 2 is estimate cash inflow. Cash inflow is of 2 types. Regular cash inflow, that is called as operating cash inflow, and then terminal cash inflow. By regular cash inflow I mean the cash inflow which is realized from the routine project activities, and routine activity is nothing but producing the goods and selling it, generating the services and selling it. So, whatever a company will realize as cash inflow year on year from the project with the help of routine activities is called as regular cash inflow or operating cash inflow, and in technical terms we call it as CFAT, that is cash flow after tax. And CFAT, I hope you remember, CFAT formula we had last time, that is profit after tax plus depreciation. Profit after tax plus depreciation. So, this is how we calculate yearly cash inflow. This is how we calculate yearly cash inflow. So, that was the step number 2, and within the step number 2 we estimate terminal cash inflow. By terminal cash inflow means the cash inflow which is realized only when project is terminated. प्रोजेक्ट जब एंड होगा तो हमें एडिशनली क्या मिलेगा, क्योंकि देखिए अगर मान लो मैं ये कहूँ एक प्रोजेक्ट है जिसकी लाइफ 5 ईयर्स है, तो फर्स्ट ईयर से लेकर 5th ईयर तक रेगुलर सेल्स होगी, रेगुलर कैश इनफ्लो मिलेगा, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो मिलेगा। 5th ईयर के एंड पे जब आप प्रोजेक्ट टर्मिनेट करेंगे, सेल्वेज वैल्यू विल बी रियलाइज्ड। मशीनरी, प्लांट, एसेट्स को जब आप सेकेंड हैंड बेचेंगे, स्क्रैप वैल्यू और सेल्वेज वैल्यू मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, whatever your investment was invested in the, or whatever your money or capital was invested in the working capital, that will also get recovered. So, both of these put together will come to you only at the termination of the project. That is why both of these are included in the terminal cash inflow. So, that is the step number 2. Now, once we have taken these 2 logical steps, and let us say examiner is asking you to calculate पे बैक पीरियड, हाउ डू वी कैलकुलेट इट। 2 स्टेप्स आपने ले ली,
थर्ड स्टेप में मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। अब देखिए फॉर्मूला लगेगा कहाँ? ए सिचुएशन इन विच CF80 is in the form of annuity. CF80 is in the form of an annuity, and I hope you remember what an annuity is. An annuity means in which every year or every period we receive the same amount for a definite time period. For example, एक प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट किया, प्रोजेक्ट आपको हर साल 2 लाख रुपए देगा 10 साल तक। ये 2 लाख कौन से होंगे? रेगुलर कैश इनफ्लो। सो वी विल से प्रोजेक्ट विल जनरेट एन एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ 2 lakh rupees for 10 years. So this becomes an annuity. So the moment you identify that your CF80, cash flow after tax, that is regular cash inflow, is in the shape of an annuity, apply the formula which I will depict on the whiteboard. Payback period is simple like this. Payback period is equal to cash outflow divided by annual cash inflow, that is annual CF80, annual CF80. So payback period कैसे बनेगा? कैश आउटफ्लो को आप एनुअल CF80 से डिवाइड करेंगे। तो जो मैंने एक सिंपल एग्जांपल आपको बोला कि एक प्रोजेक्ट में आपके बिगिनिंग में 10 लाख रुपए लग गए और वो प्रोजेक्ट आपको 10 साल तक हर साल 2 लाख रुपए देगा। तो सिंपल है, 10 लाख रुपए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, ईयरली CF80 is 2 lakhs. So answer will be 5 years. That means to say, if you invest 10 lakh rupees in that project, your 10 lakh rupees will get recovered at the end of 5th year. And उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसे आएंगे 6, 7, क्योंकि प्रोजेक्ट की लाइफ मैंने क्या बताया आपको 10 years, वो सारी अमाउंट आपका एक्स्ट्रा अमाउंट है जो इन्वेस्टमेंट से ओवर एंड अबव मिला आपको। एंड फर्दर यू विल आल्सो गेट, इफ देयर इज ए प्रोविजन or if there is a scope, terminal cash inflow. So that is the way payback period is calculated if cash inflow, that is regular cash inflow, is in the shape of an annuity. Let us practice that thing also, because sometimes we get a numerical like this in an examination. If you pay the attention, I have already put up the numerical on the whiteboard. Just note down the figures and we will practice that. What is given to us? Initial investment is on 2 elements, assets 10 lakh rupees and working capital 50,000. WC stands here for the working capital, that means money which we have invested in the working capital. So step number 1, what is my initial investment? That is at 0 time. And again one more tip I will give you for solving the examination question. Sometimes question is silent, it says investment in the assets is 10 lakh, investment in the working capital is 50,000, full stop. Timing of the investment is not given, then by default we consider that this investment will be done at the 0 time. So initial investment means investment done at 0 time. So in this project, step number 1 gives me total investment in the project is 10 lakh 50,000 rupees. So that is your step number 1, total cash outflow or total investment. Then we are given salvage value at the end of year 5 is 1 lakh. That means जो assets आपने 10 लाख की खरीदी हैं उनको एज ए सेकेंड हैंड या स्क्रैप आप प्रोजेक्ट की लाइफ क्या दे दी इन्होंने 5 साल, उसके बाद जब बेचेंगे तो आपको 1 लाख रुपया वापस मिल जाएगा. So that is your salvage value realized only at the end of 5th year. Then further it is given in the numerical cash flow after tax. मैंने पर्पजफुली ऑपरेटिंग लिखा है यहाँ पर आपके रेफरेंस के लिए, एग्जामिनेशन क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा मिलेगा. एग्जामिनेशन क्वेश्चन में मैक्सिमम केसेस में CF80 ही लिखा मिलेगा. सो इन मेजॉरिटी ऑफ द एग्जामिनेशन क्वेश्चंस यू माइट गेट इट CF80 इज per annum for 5 years 3,50,000 rupees. So simple numerical is there, sometimes one 3-line numerical is there. Initial investment in assets, I am repeating the same numerical, अगर आप लिख रहे हैं या नोट कर लिया तो well and good. Initial investment in assets is 10 lakh, investment in working capital is 50,000, project has a salvage value of 1 lakh rupees at the end of 5th year, and project will generate cash flow after tax of rupees 3,50,000 for 5 years
per annum 3,50,000. So, that is simple numerical, and question is put up to you, calculate payback period. So, your first step, total investment 10,50,000. Second step, cash inflow we have to estimate. रेगुलर कैश इनफ्लो आपको कैलकुलेट करके दिए हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बिकॉज वी आर गिवन CFAT. इसका मतलब एग्जामिनर ने ये वाली इक्वेशन पूरी कैलकुलेट करके दे दी, अब आपको कुछ नहीं करना है. और टर्मिनल कैश इनफ्लो आपको कैलकुलेट करने. याद रखिएगा, पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए टर्मिनल कैश इनफ्लो यूज तो नहीं होते, लेकिन आपको अपने सॉल्यूशन में कैलकुलेट करके दिखाने हैं. So, payback period method says, or according to payback period method, terminal cash inflow is not used in calculating payback period. I will tell you why it is not used, but it is never used in calculating payback period, but never forget to write in your answer what is your terminal cash inflow. So, in this case, terminal cash inflow. So, the moment you write terminal cash inflow, it means ये 5वें साल के एंड में आएगा. It will be salvage value, which is 1 lakh rupees, and recovery of working capital, which was 50,000 invested at 0 time. So, we can say in the 5th year, apart from getting 3,50,000 regular cash inflow, you will get, or company will get 1,50,000 also exactly at the end of 5th year. सो स्टेप नंबर सेकंड पूरा हो गया. अब आप देखिए, पेबैक पीरियड का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कहाँ लगेगा, जब जब CFAT ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो एन्युटी की फॉर्म में है. CFAT ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो जिसको हम बोल रहे हैं एन्युटी की फॉर्म में है, तो यहाँ एन्युटी की फॉर्म में है, तो हम सिंपल फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया पेबैक पीरियड का लगा सकते हैं. एंड सिंपल फॉर्मूला इज लाइक दिस, पेबैक पीरियड, and definitely it will be in years. So, we have payback period is equal to cash outflow, that is total investment, divided by annual cash inflow. आपका टोटल कैश इन्वेस्टेड कितना है इस प्रोजेक्ट में, 10,50,000, and every year you are getting 3,50,000. So, your answer for payback period is 3 years. Exactly at the end of 3rd year, you will get back your total investment. You will get back your total investment. और उसके बाद 4th year, 5th year में जो पैसे आएंगे वो एक्स्ट्रा अमाउंट है, वो आपका गेन है, प्रॉफिट है. So, this is the way payback period is calculated. Only when annuity is formed by the CFAT. अब जब आप कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पेबैक पीरियड का मान लो आंसर आता है 3.25 year. It simply means your total investment will get recovered in 3.25 years. 3 साल तो पूरे लगेंगे, and 4th year का फ्रैक्शन 0.25, that is 1/4 फ्रैक्शन लगेगा. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पेबैक पीरियड इज 3/14 year. So, it will take 3 complete years and 1/4 fraction of the 4th year. So, that is the way we calculate payback period whenever cash inflow, that is regular cash inflow, is given as an annuity. तो पहली स्टेप हो गई. सेकेंड स्टेप क्या रहती है, जब रेगुलर कैश इनफ्लो या CFAT एन्युटी की फॉर्म में नहीं है, तब पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करें. तब सिंपल तरीका है, जैसे स्टैटिस्टिक्स में आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको CFAT को, रेगुलर कैश इनफ्लो को क्यूमुलेट करना है. तो मैं जल्दी से एक क्वेश्चन आपके सामने पुटअप कर रहा हूं, आप देखिएगा कितना इजीली ये सोल्व हो जाते हैं. बट माय सबमिशन इज दैट जब जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, शॉर्टकट कभी मत लगाइए, स्टेप्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि जहां आपने शॉर्टकट लगाया वहीं पे चांसेज हैं एक्सीडेंट होने के, गलती होने के. बाय एक्सीडेंट आई मीन गलती होने के. सपोज इनिशियल कैश आउटले इन ए प्रोजेक्ट इज 10 लाख रुपीस. एक प्रोजेक्ट में बिगिनिंग में 10 लाख रुपए लगेंगे, वट एवर इट मे बी, एसेट्स में है, वर्किंग कैपिटल में है. एंड CFAT will be generated from the project during the 4 years.
So, CFAT given for 4 years is, let us say for first year it is 1,50,000, second year 3,50,000, third year 6 lakh and fourth year 5 lakh. And other than that, we are also given terminal cash inflow of 50,000. The simple question दिया हुआ है, initial investment in the project is 10 lakh rupees. Project has regular cash inflow like this during all the 4 years, and then at the end of 4th year terminal cash inflow will be 50,000. अब आप देखिए स्टेप नंबर 1 इनिशियल इन्वेस्टमेंट, स्टेप नंबर 2 भी दे दिया आपको एग्जामिनर ने. आप आइडेंटिफाई कीजिए क्या एन्यूटी की फॉर्म में है, एन्यूटी नहीं बन रही, हर साल अलग अलग अमाउंट आ रही है. तो आप क्विकली क्या करेंगे, आप इनको क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो बना लेंगे. क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो दैट मीन्स फर्स्ट ईयर के एंड तक कितना रिकवर हुआ, 1,50,000. सेकेंड ईयर के एंड तक क्या होगा, 150 प्लस 350, 5 लाख. दैट मीन्स क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो बनाते चले जाइए आप. थर्ड ईयर के एंड पे क्या हो गया, 11 लाख हो गया. 11 कैसे आया, 5 तक तो यहां हो गया था, प्लस 6 11, देन 11 प्लस 5 16 लाख. गलती से भी इसको हम नहीं जोड़ेंगे क्यूमुलेशन में, क्योंकि ये तो आना ही एंड में है. सो थिंग्स आर लाइक दिस, मेक द क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो. एंड व्हाट वाज योर इन्वेस्टमेंट, 10 लाख. आप देखेंगे 10 लाख क्यूमुलेटिव वाली लाइन में, क्यूमुलेटिव वाले कॉलम में रादर कहां आ रहा है, सेकेंड एंड थर्ड ईयर के बीच में. तो 2 साल तो पूरे लगेंगे और थर्ड ईयर का कुछ फ्रैक्शन लगेगा. तो मैं पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करूंगा, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 2 ईयर्स कंप्लीट लगेंगे. 2 ईयर्स तक मैंने 5 लाख रिकवर कर लिए, बाकी कितना रहता है इसको 10 लाख बनाने में, 5 लाख मोर इज रिक्वायर्ड. सो हाउ मच मोर वी नीड टू मेक इट इक्वल टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 5 लाख. वेयर एज थर्ड ईयर में आपके पास कितने कैश इनफ्लो आ रहे हैं, 6 लाख रुपीस. 5 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख, तो अब आपके पास आंसर आ जाएगा 0.83. दैट मीन्स योर पे बैक पीरियड इज 2 प्लस 0.83, दैट इज 2.83 ईयर. That means 2 complete years and 0.83 fraction of the third year will be consumed in getting back your 10 lakh rupees. अब यहां ध्यान रखिए, ये वाला 5 लाख कौन सा है, 10 लाख में से हमने सेकेंड ईयर के क्यूमुलेटिव वैल्यू को घटाया. अगर मान लो सेकेंड ईयर की क्यूमुलेटिव वैल्यू होती 3 लाख, तो 10 में से 3 घटाते, या मान लो सेकेंड ईयर की क्यूमुलेटिव वैल्यू 8 लाख होती, तो 10 में से 8 घटाते तो हमें और कितने चाहिए, 2 लाख रुपए, टू मेक इट इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट. So that is how payback period is calculated. That is how payback period is calculated. So dear learners, I have explained you both the things. Annuity बन रही है तब कैसे payback period calculate होगा, annuity नहीं बन रही तब payback period कैसे calculate होगा. Let us take a quick break of 1 to 2 minutes. हम break के बाद फिर मिलेंगे, बाकी के methods को discuss करेंगे. Till then, stay tuned. Dear learners, welcome to IGNOU. You are going to lead with a difference. So how do you lead with the difference? The unique attributes of the university system through which you are going to go for the management program or any other program is the multiple entry and exit. It provides flexible learning where a learner can learn at its own will and at its own pace. It offers multimodal approaches. Like we have MBA, the normal through the distance learning mode and through online mode. So it has a multimodal approach. It has face-to-face counseling. It offers web counseling also. It provides continuous evaluation to enhance the skills of the learners through assignments, and
It provides the opportunity for the learners to appear for the exams twice a year through term-end examination system. It gives interactive satellite-aided communication network through teleconferencing, and it also gives the radio counseling also. When we talk about School of Management Studies, it was the first school and it had the pioneer program of Diploma in Management. Till date, it has been offering around 14 programs in management and 13 programs in commerce disciplines. The school has international presence as well, as it provides the programs in specific Asian and African countries across the globe. Now talking about Master of Business Administration. What are the objectives? What are the learning objectives of this Master of Business Administration? What are the unique features of this Master of Business Administration which IGNOU is offering? First of all, it revitalizes and accelerates the pace of your professional development. And how can it do it? Through this program, which is one of its kind and it has been built through the insights and knowledge of faculty and experts. The content aids in new ways of thinking. It provides exciting new opportunities, new approaches of learning. It has contemporary courses ranging from business communications to human resource management, marketing management, financial management, operations management, all sorts of courses which are required in the present times for the industry, and as per the demands of the industry, all the courses have been included in this particular program. It is a uniquely designed program for both the fresh graduates as well as the working professionals, and it is offered pan-India and also in select countries internationally. Let us see the program at a glance. The program name is MBA, and the eligibility criteria for this program is bachelor's degree, minimum of 3 years duration with at least 50% marks and 45% marks in case of the reserved category. The duration of the program is minimum 2 years and maximum 4 years, and the program fee. वेलकम बैक लर्नर्स। ब्रेक पे जाने से पहले हमने पे बैक पीरियड क्या होता है यह देखा था और दो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स किए थे। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, लेट अस सी व्हाट आर द रूल्स टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रोजेक्ट, बिकॉज अल्टीमेटली पर्पज ऑफ अप्लाइंग द कैपिटल बजटिंग मेथड इज टू मेक ए डिसीजन वेदर ए प्रोजेक्ट इज वर्थ वाइल और नॉट, फाइनेंशियली वाइबल और नॉट। दैट मीन्स हमने उस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने। So, under payback period method, following accept reject rules are applicable. Accept a project when payback period is less than or equal to predetermined cutoff point or predetermined payback period. So, sometimes a businessman decides that I will take the projects only when payback period is 2 years or less than that. That means all the projects which have the payback period 2 years or less than 2 years will be accepted for implementation, else rejected. So, that is a simple rule. But ये rule कब लगेगा? जब आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चन में दिया होगा कट ऑफ पीरियड क्या है या कट ऑफ पे बैक पीरियड क्या है। अदरवाइज अगर आप एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड कैलकुलेट करते हैं, इट मे बी एनीथिंग 2 years, 3 years, 3.5 years। इसका सिंपल मीनिंग है कि what is the time period at the end of which I am going to recover my
total investment in the project with the help of CFAT, that is given in the meaning also. Now further let us proceed, because हर मेथड के कुछ ना कुछ फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं. So what are the pros and cons of this particular method? So one benefit or one thing with the project is that it is very easy to apply, or payback period method, it is very easy to apply. It does not require any technical knowledge, no time value of money. So that is the biggest advantage of this method. However, what is the disadvantage? Disadvantage number 1, being non discounted cash flow method, it does not take into consideration time value of money. That means फर्स्ट ईयर के एंड पे जो पैसे मिल रहे हैं उसका टाइम वैल्यू से कोई लिंक नहीं रख रहा है, सेकेंड ईयर के एंड पे भी वही रख रहे हैं, थर्ड के एंड पे भी वही रख रहे हैं. जैसे मैंने आपको पहले बताया, इफ यू गेट 10,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 10,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, payback period says both the 10,000s are at par, at parity, but practically due to time value concept both are not at parity. So that is the drawback. And drawback क्यों? क्योंकि ये non discounted cash flow method है. उसके अलावा एक और ड्रॉबैक भी है, पेबैक पीरियड मेथड टोटल कैश इनफ्लो को कंसीडर नहीं करता. सो पेबैक पीरियड मेथड डज नॉट कंसीडर द टोटल कैश इनफ्लो कमिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट. इट टेक्स द पेबैक कैश इनफ्लो ओनली up till the point of payback period. So only up till the point of payback period cash inflow is considered. Whatever cash inflow comes beyond that, it is not considered. To elaborate on that point, I have taken an example. Just pay the attention. If you see, I have written that a company is considering two projects, project X and project Y. Investment in both the projects is equal, 3 lakh each. X में भी 3 लाख लग रहे हैं, Y में भी 3 लाख रुपए लग रहे हैं. Both the projects have a life of 4 years and we are given CFAT, cash flow after tax, that is regular cash inflow, 1 lakh, 1 lakh, 4 lakh and 4 lakh. Whereas project Y gives you 2 lakh, 2 lakh, 1 lakh and 3 lakh. If I ask you to calculate the payback period, simple thing, step number 1, what is my investment? Step number 2, what is my cash inflow? अब आप देखेंगे कैश इनफ्लो एन्युटी की फॉर्म में नहीं है. सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डू द क्यूमुलेशन ऑफ द कैश इनफ्लो. तो मैं जीरो का एलिमिनेट कर दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो फॉर प्रोजेक्ट एक्स इज बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हाउ मच वी आर गेटिंग 1 lakh. Again we are getting 1, so 1 plus 1 becomes 2. Definitely it is 2 lakh. 2 plus 4, 6 lakh. So amount now becomes in lakhs. So by the end of third year you get 6 lakh, then 6 plus 4, 10 lakh. So in the total life of 4 years X is giving you 10 lakh. But payback कैसे कैलकुलेट होगा? आपको तो ये देखना है कि आपका 3 लाख रुपए कब वापिस आएंगे. So 3 falls in the cumulative column between second and third. So it will take how many years? 2 years plus. अब आप देखिए सेकेंड ईयर के एंड तक टोटल क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कितना हो गया? 2 लाख. आपको टोटल एम क्या है? 3 लाख. तो 3 minus 2 इज रिमेनिंग 1 लाख. कब आएगा? डेफिनेटली थर्ड ईयर में. बट अब थर्ड ईयर में आपके पास क्या आ रहा है? 4 लाख. सो डिवाइड इट बाय द थर्ड ईयर्स कैश इनफ्लो. सो यू गेट एन आंसर 2.25 year. So for project X, payback period is 2.25 year. So by the end of 2.25 year, you will get back your 3 lakh invested in project X. Similarly, हम project Y के लिए कैलकुलेट करते हैं. तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस भी होगी कि payback period कैलकुलेट कैसे होता है. So cumulative cash inflow for Y is 2 by the end of first year. 2 plus 2 becomes 4. 4 plus 1, 5. 5 plus 3, 8. अब आपका टारगेट क्या है? द टाइम पीरियड बाय द एंड ऑफ विच आई गेट बैक माई 3 lakh, एंड 3 lakh फॉल्स विद इन 1 and 2. दैट मीन्स 1 complete year and some fraction of the second year. So for Y it will be there 1 plus how much we have recovered by the end of first year? 2 lakh. Again deficiency is 1 lakh, and how much total we are getting in the second year? 2 lakh.
So, it becomes 1.5 year. So, we have calculated payback period. Now comes ranking. The project which has got lowest payback period और minimum payback period is ranked first. उसकी priority पहले आएगी. तो Y की priority क्या आ गई? First rank and X की आ गई second rank. So, as per the acceptance and rejection rule, accept reject rule, we will accept Y and we will reject X. हो गया काम. But practically आप देखिए, you are investing 3 lakh in X and in the total life of 4 years, क्योंकि प्रोजेक्ट तो 4 साल ही चलाएंगे आप. How much you are getting? 10 lakh. If you invest 3 lakh in Y, you will run the project for all the 4 years, but in total how much you are going to get? 8 lakhs. So, X gives you more returns, क्योंकि इसमें टोटल 3 लाख रुपए लगा के आपको 10 लाख वापस मिल रहे हैं, वेयर एज इसमें 3 लाख लगा के आपको कितने मिल रहे हैं? 8 लाख रुपए. सो फंडामेंटली स्पीकिंग, यस, project X is better as compared to Y, but as per payback period method, project Y is better because its payback period is shorter as compared to X. So, that is the lacuna or drawback, that it does not consider total cash inflow, it considers the cash inflow realized up till the payback period. So, that is the biggest drawback of this particular method. So, that is what I have explained you. If suppose in examination you get a theory question, define payback period and what are its advantages and disadvantages. Whatever I have explained you in the past 30-40 minutes, अगर आप ये लिख देंगे, I am sure that you will get good marks. So, this is the way logically you have to give the answer. Now, let us proceed further. One more example you can see, then we will switch over the method accounting rate of return. What example I have put forth for you? Look at the right hand side. Investment in the project is on assets 5 lakh rupees, on working capital 1 lakh rupees. So, that is the investment that is given in the question, and then we are given project has a life of 3 years. How will you come to know? क्योंकि आपको 3 साल के डेटा दिए. So, implied meaning is that project has the life of 3 years. PAT is given. If you remember, PAT stands for profit after tax. Sometimes alternate word is used, earning after tax, EAT. So, profit after tax for years 1, 2, 3 is given, and then we are given salvage value 2 lakh rupees, and question is calculate payback period. So, this is the only question data. Examiner is asking you calculate payback period. Again follow the logical steps. Step number 1, estimate total cash outflow, that is total investment in the project. In assets you are investing 5 lakh, in working capital you are investing 1 lakh. तो आपका total investment क्या हो गया? तो आपका solution इस तरह से चलेगा, total investment in the project is 5 plus 1 6 lakh rupees, and payback period means that time period by the end of which we get back 6 lakh rupees with the help of regular cash inflow. But examiner ने आपको regular cash inflow नहीं दिए. Pay the attention. Examiner has given you profit after tax. So, you have to convert that profit after tax into CFAT, that is regular cash inflow. Now, if you see in the previous class we had seen how depreciation is provided. If nothing is given, we use the straight line method of depreciation, and under straight line method of depreciation, annual depreciation is simply total cost of assets minus salvage value divided by life of the asset. So, in our case total cost of asset is 5 lakh minus salvage value is 2 lakh and life is 3 years. So, annual depreciation is 1 lakh. That means जिसने भी ये profit after tax calculate किया है, he had charged 1 lakh rupees annual depreciation from year 1, 2 and 3. And regular cash inflow or CFAT simply means profit after tax plus depreciation. So, we will convert that into CFAT. So, आप ऐसा column बनाएंगे examination solution में, year, profit after tax. Now, this solution you will create.
1,50,000 plus the depreciation. So, CF80 for first year becomes 2,50,000. Then 2 lakh plus 1 lakh, it becomes 3 lakh. Then 4 lakh plus 1 lakh, 5 lakh. So, that is the one part of calculation of CF80, and terminal cash inflow as such is given salvage value. So, step number 1 is clear, step number 2 is clear. Now, what is left out? Focus on the things, are we having cash flow after tax or regular cash inflow in the form of an annuity? No, because annuity is not getting formed. हर साल सेम अमाउंट नहीं मिल रही, तो आपने क्या करना है? क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, that means cumulative cash flow after tax. By the end of first year, how much you have recovered? 2,50,000. 250 plus 3, 5,50,000. 550 plus 5, 10,50,000. And गलती से भी टर्मिनल वाले को ऐड नहीं करना है, because while calculating payback period, we never consider terminal cash inflow for the calculation of payback period, but yes, we have to show that terminal cash inflow इतना आएगा, otherwise एग्जामिनर 1 या 2 नंबर उस गलती के काट लेगा. तो शो जरूर करना है लेकिन उसको ऐड नहीं करना है. अब आपका टारगेट क्या है? Payback period means that time period by the end of which I get back my 6 lakh rupees with the help of regular cash inflow. So, 6 lakh falls in this particular zone. That means 2 complete years and some fraction of the third year will be consumed in arriving at or in getting back me 6 lakh rupees. अब आप देखिए 2 complete years will be there. So, your payback period is 2 complete years plus how much is the deficiency, because by the end of second year you have recovered 5,50,000 out of 6 lakhs. So, 6 lakhs minus 550, 50,000 is the deficiency. And how much total you are getting in the third year, क्योंकि 2 के बाद third year आएगा 5 lakh. So, you get an answer 2 plus 0.10, that is 2.1 year, 2.1 year. So, your payback period in this case is 2.1 year, 2 complete years and 0.1 fraction of the third year. तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 0.1 fraction मतलब 1.2 months. So, that is the way we calculate payback period. So, dear learners, I have explained in detail with 2 or 3 examples. Something like this you get examination questions. So, focus on the things, never miss the steps, because I have seen many times students make a shortcut and जैसे आपने shortcut किया गलती के chances रहेंगे. तो cash outflow first step, cash inflow second step, then apply the method. So, that was payback period method. Then we have another method, accounting rate of return, which is also called as average rate of return. If you remember, when I was explaining you in the beginning that in all methods we will be using cash inflow, but yes, there will be one method in which cash inflow will not be used, and the method is accounting rate of return. As name suggests, accounting rate of return means that rate of return which is calculated by considering accounting profits, and accounting profit क्या होते हैं? Profit after tax. So, in ARR method we consider accounting profit, that is profit after tax, to calculate percentage return. So, in this case in ARR method answer will be in percentage. If you see the definition which we can have a look at, accounting rate of return, ARR means that percentage return on my investment which I will realize year on year. For example, I say you will invest 10 lakh rupees in a project and ARR you have calculated. I will tell you how it is calculated. ARR you have calculated 12% and life is 7 years. It means on your investment you will earn 12% year on year. Every year you will earn 12%. Every year you will earn 12%. Every year you will earn 12% for all the 7 years. So, that is called as ARR. Now, question comes, what are the steps to calculate ARR? What are the steps to calculate
ARR. So, steps are simple. Steps are simple. Steps are simple. So, that is the definition of ARR. The ARR is obtained dividing annual average profit after tax by average investment. I will tell you how it is calculated. Logical steps I will show you on the whiteboard. It is very easy, very easy. One again reminder, in this method also we never consider time value of money. So, step number 1, estimate total investment, that is how much you will be investing in the project. Step number 2 in this method will be there, calculate profit after tax from year 1 till the end of the life of the project. And then we will apply how ARR is calculated. So, ARR formula is simple. ARR formula is simple and ARR can be calculated on 2 different bases. One basis is ARR on average investment and another basis is ARR on total investment. So, we will do it on average investment. We will do it on average investment. And by default, in an examination question, sometimes examiner or rather in majority of the times, examiner will not tell you on what basis, on what base you have to calculate ARR. So, default connotation is that it will be calculated on average investment. And ARR is simple like this, ARR is equal to average profit after tax divided by average investment, average profit after tax divided by average investment. And if you multiply it with 100, answer will be in percentage. अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आंसर फ्रैक्शन में आएगा. सो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट. अब आप देखिए स्टेप नंबर 1 आपने ले ली, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, स्टेप नंबर 2 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट मीन्स टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट. तो अगर मैं इस क्वेश्चन पे चलूं जो मेरे पास यहां है, suppose examiner has given you the question like this, investment in the asset is 5 lakh, in working capital is 1 lakh, profit after tax is given like this, and we are also given salvage value is 2 lakh. ये complete numerical था हमारा पिछले वाला. On the same numerical, examiner might ask you to calculate ARR. So, your total investment is 6 lakhs, profit after tax is given. Now, what you need in the formula? You need average profit after tax. So, to make this particular into average, आप इन सबको जोड़ लीजिएगा. 150 plus 2 plus 4, 7,50,000. So, total profit after tax summation PAT is 7,50,000. That means, in all the 3 years put together, your total profit is 7,50,000. And how we calculate average? Simple average we have to calculate. Average PAT is summation PAT, that is sum total of PAT upon life. So, that will be 7,50,000 divided by 3. So, 2,50,000 will be your annual profit. Every year your profit will be 2,50,000, because 3 साल में आपका टोटल प्रॉफिट कितना है 7,50,000. उसको जब आप 3 से डिवाइड करेंगे 2,50,000. So, on an average every year you are getting 2,50,000. Then comes how to calculate average investment. तो एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला सिंपल है. फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज इन्वेस्टमेंट डू इट लाइक दिस. कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2. 2 कांस्टेंट है, हर केस में 2 रहेगा ही. कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2.
plus salvage value and plus working capital. अब हमारे केस में क्या था, cost of asset was 5 lakh, salvage value is 2 lakh divided by 2 plus salvage value 2 lakh plus working capital 1 lakh. आप देखिए 5 minus 2 you will get 3 lakhs divided by 2 1,50,000 plus 2 lakh plus 1 lakh. So, it becomes 4,50,000. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 5 में से 2 गया 3, 3 divided by 2 1,50,000 plus 1 lakh 2 lakh plus 1 lakh. So, 4,50,000. So, your average investment is 4,50,000. You have average investment, you have average profit, plug in the values into this one, you get ARR. 2,50,000 divided by 4,50,000. 2,50,000 divided by 4,50,000 multiplied by 100. You can quickly calculate how much will be your ARR. That turns out to be 55.56%, and never forget to write it per annum for 3 years. That means, on an average you will earn 55.56% accounting rate of return on your average investment of 4,50,000. So, dear learners, this is the way we can quickly calculate ARR on average investment. Then in this class, this much is sufficient. We have dealt with the payback period, we have dealt maximum part of the ARR, remaining part we will see in the next class, which is on 11th July after 2 days. So, till then keep on revising, keep on learning the things, and we will continue with the same pace, same methods. Thank you. Thanks for giving me your time.